अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। आज हम एड इन डेवलपमेंट का ही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में सुना, हमने एड इन डेवलपमेंट को डिफाइन किया, मुख्तलिफ टाइप्स को डिफाइन किया और दोनों केसेस को समझने की कोशिश की कि कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो कि एड के फेवर में जाते हैं और कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं जो उनके अगेंस्ट जाते हैं। आज हम अपनी इसी डिस्कशन का आगाज करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द की बैरियर्स टू एड इफेक्टिवनेस। कुछ किताबों का हवाला पढ़ेंगे और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एड नहीं इफेक्टिवनेस देन व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अस। सो इसी एजेंडा के साथ लेट्स ट्राई टू बिगिन आवर डिस्कशन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, देयर आर 3 की बैरियर्स टू इट इफेक्टिवनेस। सो ये जो 3 की बैरियर्स आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ रिसर्च पेपर और मुख्तलिफ जरीदों से लिए गए डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्टेड फाइंडिंग्स हैं जो कि मैं आपके सामने नजर भी आ रही हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिलीजियस टेंशन which are common in the poorest country and then play a big role for the military in politics. So for instance, एड की इफेक्टिवनेस ना होने का जो रिलीजियस टेंशन है, जो कि एड के अराउंड भी हो सकती है, डेवलपमेंट सेक्टर की प्रोजेक्ट्स के अराउंड भी हो सकती है, दैट इज वन ऑफ द की बैरियर्स to aid effectiveness. Second is large government size. This is often a sign of large military presence and a corrupt government. So जितनी ज़्यादा रेटिविज्म है, जितने बड़े ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, that essentially means कि आपके पास करप्शन के भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं और जो लीकेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. So that is also one of the key barriers to aid effectiveness. And third, and certainly not the least, low level of law and order. So law and order captures the quality of institutions, so which many economists argue are essential to economic development. So जितनी ज्यादा अमल दखल लॉ एंड डेवलपमेंट का नहीं होगा किसी भी माशरे में और किसी भी गवर्नमेंट के दौर में, that essentially implies that aid will not be effective in that society or in that country for that matter. So ये religious tension, large government and low level of law and order, these are the 3 key barriers to aid effectiveness. So better law and order suggests that countries are more open to trade and have better protection of property rights. So this gives people the ability and incentive to invest and earn money productively in the economy. So जब आप इमेजिन करें, जब आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के मसाइल नहीं होंगे, बड़ी गवर्नमेंट नहीं होंगी, रिलीजियस टेंशन या सोशो कल्चरल टेंशन वहां पे उस इलाके में नहीं होंगी, देन आपकी जो एड इफेक्टिवनेस की भी जो इंडेक्स है उसके अंदर भी बहुत खातिर ख्वाह इजाफा नजर आएगा. मैं आपको कुछ किताबों के हवाले बताता हूँ कि कुछ एड के बारे में किताबें लिखी गई थी. ये किताब है डेड एड के नाम से. बुक आपको जो अपनी राइट साइड ऑफ द स्क्रीन के ऊपर उसका कवर भी नजर आ रहा होगा. आई एम जस्ट गोइंग टू रीड वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक जो कि आप अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. दैट एंड आई कोट, आई हैव लॉन्ग बिलीव that far from being a catalyst, foreign aid has been the biggest single inhibitor of Africa's growth. So among the shortcomings, aid is correlated with corruption, fosters dependency, and invariably instills bureaucracy that hinders the emergence of an essential entrepreneurial class. So for Africa to grow in a sustained way, foreign aid will have to be dramatically reduced over time, forcing countries to adopt more transparent strategies to finance development. So this is one of the aspects of development, and we all know कि इससे इनका कहने का क्या मतलब था. इस किताब के अंदर भी द ऑथर ने एक टफ लव अप्रोच की बात की है और ये हमारे और भी ममालिक के अंदर अप्लाई भी हो सकता है और हम इसको इससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हैं. और मैं आपको बताता हूँ कि है क्या टफ लव अप्रोच which she talks about in the book. So in the 5 years, all aid to Africa must stop. In its place, African nation will need to implement new policies, including macro loans, improve remittances, and formalize domestic savings scheme, as well as internationally improving foreign direct investment, borrowing responsibly, and securing more equitable trading arrangements with the West. That is her tough love approach, जिसके अंदर आप एड को रोक रहे हैं और आप अपने बाकी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. And you're also suggesting that we should invest and take the returns more by implying by improving on our national policies, जो कि इकोनॉमी को बेहतर तरीके और बेहतर सफर की तरफ लेके जाते हैं.
Next, we have Duflo and Banerjee, which is poor economics. इनको previous जो economic में Nobel Peace Prize मिला था, that is also, these are the two authors जिनको Peace Prize मिला था in economics. So Duflo and Banerjee, economists at Poverty Action Lab, so they have pioneered the use of randomized controlled trials to find out what works in development. So to test the efficacy of projects, intervention within a population of 2 or more groups, जिसको आप control group भी कहते हैं, top down 8 projects afflicted by ideology, ignorance, and inertia, which is failure to change when project does not work. So ये वो 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से 8 projects क्यों नहीं काम करते जब भी कोई development interventions होती हैं, why they do not work. That is their conclusion, जिसके अंदर we have also have a quote on this, that precisely because the poor have so little, we often find them putting so much careful thought into their choices. So they have to be sophisticated economists just to survive. That is the insight which Banerjee has helped us reveal about the economics and the understanding and how they improve upon their lives by choosing to invest and spend more carefully. And next, we have Angus Deaton on 8. ये भी एक किताब है, The Great Escape. So when the conditions for development are present, aid is not required. So when they do not exist, aid is not useful and probably damaging. So foreign aid is anti-democratic because it frees local leaders from having to obtain the consent of the government. So you see, एक जो Dayton ने बहुत important point इस किताब के अंदर उठाया है, which is more from sociological and international relations lens, how if you give foreign aid, that is both anti-democratic and it frees the local leaders from taking the consent and the ownership. And now people's expectations, people expectation to give welfare projects and to improve upon the lives is shifted from local leaders to the foreign powers. And that is anti-democratic. So that is one of the key observation of Dayton जो उन्होंने किताब में लिखी है, and rightfully so. उसके ऊपर वो aid alternatives के ऊपर बात करते हैं. And what should the West do instead of providing aid? So he talks about in his book that it can invest in finding a vaccine for malaria, which is still a mass killer. It can push drug companies to tackle diseases that threaten poor countries. It can support the free flow of information about interventions and new management techniques. It can relax trade barriers and provide poor countries with expert advice at the bargaining table. It can ease immigration restraints and accept newcomers. So ये वो alternatives हैं जो कि Dayton ने suggest किए, because according to him, it is not beneficial for poorer country. That's why we need to look for more alternatives, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी economy को भी बेहतर कर सकते हैं, अपने माशरे को भी बेहतर कर सकते हैं, because जो foreign aid है वो उनके लिए फायदेमंद नहीं है. So aid can bring economic, human, environmental benefits. Development can take place without aid. So well-targeted aid can boost growth, but the time lags can take years. So aid effectiveness boosted by a randomized control trial, जो कि Duflo और Banerjee का एक method है जिसके ऊपर उन्हें इनाम भी मिला था. So improving transparency of aid budget conditionally linked to improve governance, and aid that stimulates and support enterprise. So different aid projects can affect growth at different times and different degree. So consider alternatives to direct aid, जिसके ऊपर debt forgiveness है, जिसके अंदर आप कर्जे माफ कर रहे हैं, lowering trade barriers है for the least developed countries. So now यहाँ आपने क्लास देखा होगा कि हम मुख्तलिफ किस्म की एड के बारे में बात करें, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी की थी. व्हाट वर द फ्यू एंड की एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फॉरेन एड जो कि हम मुख्तलिफ तरीके से यूज करते हैं. So in view of all of this, if we talk about कि अगर let's say if we do establish that aid is not beneficial for the country, तो हम इस साइकिल से कैसे निकलें जो कि एड साइकिल है. So many economists and many developmental economists have suggested a model जिसको आपके अपनी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, that we need to create sovereign wealth funds, we need to foster microfinance, we need more equitable trade flows, we need remittances from diaspora. जैसे for instance जो मुख्तलिफ एक ही मुल्क के बाशिंदे जो मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के रहते हैं, वो जो पैसे भेजेंगे उनको remittances for diaspora बोलते हैं. Formalized domestic saving. This is, according to many domestic economists, is the way to how we can break out of domestic aid cycle, which is a vicious cycle, जिसके through आप निकल भी नहीं सकते, and that is the
साइकिल जिसके अंदर आप कर सकते हैं. सो अफ्रीकन लिविंग अब्रॉड सेंड मोर मनी होम to their families when official development assistance by Western aid donors. So in 2010, the African diaspora remitted $51.8 billion. In the same year, ODA to Africa was $43 billion. So ये वो सिग्निफिकेंस है कि अगर आप अपनी रेमिटेंसेस को इंक्रीज करें, ट्रेड फोर्स बेहतर करें, सॉवरेन वेल्थ फंड क्रिएट करें, तो दैट विल एसेंशियली improve upon and that will help the countries to break from the cycle of aid. आज के लेक्चर में हमने सब यही डिस्कस करना था एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट स्टडीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज.